Hello everyone. So we were doing lesson number 2, that is your structure of atom. And before doing your Bohr model of an atom, we must know what were the limitations of Rutherford model of an atom, which leads to formation of your Bohr's model of an atom. So his very first limitation is he was unable to explain the stability of an atom. He was unable to explain the stability of atom. So according to your, if we'll talk about your Rutherford model of an atom, so according to your Rutherford model of an atom, your atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in the center and the electrons were revolving around it. क्लियर कि सेंटर में आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हेवी न्यूक्लियस है जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. क्लियर. नाउ दिस मॉडल वॉज कंपेयर्ड विद व्हाट, सोलर सिस्टम. दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद व्हाट, सोलर system, in which your planets are revolving around what, is revolving around sun, and they are continue to move. ये continuously क्या करते हैं, move करते रहते हैं. They continue to move in what, fixed path, fixed circular path, because the force of attraction, that is your gravitational force, is providing what, is providing your centripetal force to these planets, and due to which they are revolving in a fixed path. I'm not using term centrifugal because centrifugal is a pseudo force. Clear, isn't it? But if we'll compare these two models, that is your Rutherford model of an atom and solar system, we are having a major differences between these two. Now, what are the major differences? If we'll talk about your electron and your nucleus, so your electron and nucleus are microscopic particles, whereas your sun and your planets are big bodies, and hence your Newtonian laws of motion do not apply to the motion of microscopic पार्टिकल की. अगर हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को कहाँ पे लगाएं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लगाएं, तो ये एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंडली, अगर हम यहीं पे बात करें, अगर हम बात करते हैं योर प्लैनेट्स एंड सन, दे आर नॉट चार्ज बॉडी, बट इफ वी आर यूजिंग टर्म व्हाट, electron and your what, positive charge, so they are what, electron and nucleus, so they are charged bodies. So if we are comparing your Rutherford model of an atom with solar system, clear, और जिसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दैट इज टोटली व्हाट, रॉन्ग. क्लियर कि जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन के, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड व्हाट, न्यूक्लियस. क्लियर. बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल नहीं है. I'll explain you one more example, which will tell us that your Rutherford model is not able to explain the stability of atom. So according to your classical electromagnetic theory, अगर हम classical electromagnetic theory की बात करें जो कि आपके पास मैक्सवेल ने दी थी, so according to that theory, if we are having any charged particle and when this charged particle get accelerated, then it will start emitting what, radiation, or it should emit radiation. कि अगर कोई भी आपके पास चार्ज बॉडी है और वो बॉडी अगर एक्सेलरेट होती है, क्लियर, तो वो हमेशा आपके पास क्या करेगी, रेडिएशंस एमिट करेगी. और अगर वो रेडिएशंस एमिट करेगी तो रेडिएशंस एमिट करना मतलब एनर्जी एमिट कर रही है, isn't it? So according to your classical electromagnetic theory, an accelerated charged particle emit your what, electromagnetic radiation. So according to classical मतलब पुरानी, classical electromagnetic wave theory, and accelerated charged particle emit electromagnetic radiation, that is एनर्जी. कि अगर हम किसी भी आपके पास, और ये इसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करें तो वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है. क्लियर. सो
when this theory was applied to Rutherford model of an atom, and in Rutherford model of an atom your charged particle is also accelerated. जैसे कि देखो आपके पास यहाँ पे आपके पास सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, क्लियर, and here your electron is revolving, clear, around the nucleus your electron is revolving, and when electron will revolve it will change its direction of वेलोसिटी. जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज, isn't it? And change in direction of velocity means acceleration. तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल भी है, isn't it? और ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेटेड भी है, क्लियर. तो उससे पूछा गया, आपके रदरफोर्ड से पूछा गया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बॉडी भी है और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है. नाउ यू नो व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग, बिकॉज दिस electron is revolving around what, nucleus, and when this electron is revolving its direction of velocity will change, and if there is change in velocity it means acceleration is taking place. So जब इससे पूछा गया कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये एनर्जी भी क्या करेगा, एमिट करेगा ना कि नहीं करेगा. सो दिस इलेक्ट्रॉन विल एमिट व्हाट, रेडिएशन. सो देयरफॉर व्हेन दिस थ्योरी इज अप्लाइड टू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट व्हाट, एनर्जी. तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा. एंड इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी इट विल लीव इट्स पाथ, ही अपना पाथ क्या करेगा, छोड़ देगा. एंड द रेडियस ऑफ द पाथ, अगर एनर्जी डिक्रीज करता जाएगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल्स पे आता जाएगा, इजंट इट. सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी, this electron will radiate energy, it will leave its path and the radius of the path will decrease. जैसे जैसे घूमता चलेगा वैसे वैसे अपना क्या है, पाथ क्या करता चलेगा, छोड़ता चलेगा और आपके पास लोअर एनर्जी लेवल्स पे क्या आता चलेगा, क्लियर. एंड दिस फिनोमिना कंटिन्यूज एज अ रिजल्ट योर टाइम विल कम व्हेन योर इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू व्हाट, न्यूक्लियस. और अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो ये आपकी एटम क्या हो गई, अनस्टेबल, क्लियर. सो और इसके लिए बोला साइंटिस्ट ने अगर ऐसा होता है तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा, 10⁻⁻⁸ सेकेंड. तो एटम क्या हो गया, बहुत ही अनस्टेबल, क्लियर. सो दिस वाज अ वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ योर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, दैट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. कि इसने पहले से जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की थी वो की थी इन कंपैरिजन विद व्हाट, सोलर सिस्टम. बट अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम जो है वो मैक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज बॉडीज हैं, जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो क्या हैं आपके पास, स्मॉल बॉडीज. तो न्यूटन के लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते. दूसरी बात, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ये आपके पास न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है कि सोलर सिस्टम की बॉडीज़ पे, बट यहाँ पे आपके पास चार्ज बॉडीज़ हैं, क्लियर. तो आपके पास हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, पहली बात. दूसरी बात, इन्होंने जब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की हमने बात करी तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, तो वो रेडिएशंस एमिट करती है एंड रेडिएशंस आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी. सो व्हेन वी applied this theory to your Rutherford model of an atom, so your electron is what, here your electron is accelerated. Now how this electron is accelerated, now this electron while moving, when this electron is revolving, there is change in velocity of this electron, and change in velocity of electron is known as what, acceleration. Means this electron is what, accelerating. So when this electron is accelerating, it means it must radiate what, energy. So if this electron is radiating energy, so what will happen, it will leave its path, and if it will leave its path, what will happen, the radii of this atom will decrease, and finally this electron will fall into what, nucleus, and your atom will in turn become unstable. And for this phenomena, that what will be the time, kitna time lagega, that will be your 10⁻⁻⁸ second. So this was his very first limitation.
So we'll talk about second limitation of your Rutherford model of an atom. So his second limitation was he cannot explain the line spectrum of element. He's not explain why elements produce line spectrum. He could not explain line spectra of the elements. Clear that he is not able to explain that why elements are producing what line spectrum. वो continuous spectrum क्यों नहीं दे रहे, वो line spectrum क्यों दे रहे हैं कि अगर आपके पास अगर हमने मान लो हाइड्रोजन के एटम को क्या किया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हीट किया, क्लियर, हीट किया एट हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पे जो आपके पास स्पेक्ट्रा मिल रहा था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था. क्लियर, कुछ लाइंस वहाँ पे प्रेजेंट थी, कुछ लाइंस क्या थी, एब्सेंट थी. सो वाई दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूसिंग दिस, this could not be explained by your what, by your Rutherford model of an atom, और Rutherford इसको explain नहीं कर पाया था. He could not explain the line spectrum of element, that is he is not able to explain why elements are producing line spectrum, why these lines are not continuous, why some lines or some colors or some wavelengths are absent. Clear? So this was his second limitation. We will talk about your third limitation. So your third limitation is Rutherford model of an atom says nothing about electronic structure of atom. That what does it mean? That how electrons are arranged around nucleus. कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे होगा, ठीक है, और उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस. क्लियर, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. अगर फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सेकंड शेल में है तो उसकी एनर्जी क्या होगी. क्लियर, इन शेल्स की एनर्जी क्या होगी. सो ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एंड व्हाट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट different energies of these electrons. So he is not able to describe the distribution of electrons and energies of electrons. So unable to describe the energies, and he's unable to describe energies and your what energies and distribution, energies of electrons and distribution of electrons and different shells. Clear? So he is not able to describe the energies of electrons and distribution of electrons in different shells. Clear? Or what we'll say, he is not able to explain the electronic structure of atom, that is electronic structure of atom. Clear? So these all were what limitations of your Rutherford model of an atom. और इन्हीं limitations को Rutherford ने क्या किया, improve किया, और Rutherford के मॉडल में थोड़े से चेंजेस किए, और आ गया आपके पास Bohr model of an atom. So we'll discuss your Bohr model of an atom in next video. Thank you.